Hello everyone, this is Dr. Mihir Shah once again with another video. In this video, we are going to solve university question paper for the year April 2025 under the subject Innovative Financial Services. Again, a very important video for all the TYBMS M6 student. So in this video, basically, we are going to solve one practical problem sum that had appeared in April 2025 question paper. So let us see what was this question and how to solve them in the most simplest and easiest manner. ओके सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. ऑन 1st April 2020 Moon Limited purchased machinery from Sun Limited on hire purchase basis. तो ये हायर परचेज के रिलेटेड सम है. वी आर मून लिमिटेड, हम लोग ने सन लिमिटेड जो वेंडर है उनसे मशीनरी खरीदे है. द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज ₹9 lakhs. So 9 lakhs is your opening cash price. डाउन पेमेंट ऑफ ₹3 lakhs वॉज मेड ऑन द डेट ऑफ परचेज. 3 लाख हम लोगों ने पे कर लिए. सो सी रिमेंबर 9 लाख में से फ्रॉम 9 lakhs वी हैव पेड 3 lakhs. सो 6 लाख बचते हैं. ओके, द बैलेंस वॉज पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट. तो बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया गया. तो 6 lakhs डिवाइडेड बाई 3, सो 2 lakhs ईच. सो हर साल 2-2 लाख रुपए हम पे करेंगे प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, payable on 31st March each year. The first installment being payable on 31st March 2021. So 2021 में सबसे पहला इंस्टॉलमेंट पे करने वाले 3 साल के लिए. So see, I've written here 31st March 21, 22 एंड 23. 3 साल तक हम पे करेंगे. तो हम लोगों ने ये एक छोटा सा वर्किंग बना के रखा हूँ. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड सन लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मून लिमिटेड. तो हम लोग मून लिमिटेड, इन मून लिमिटेड वी हैव टू प्रिपेयर नंबर 1 मशीनरी अकाउंट और सेकेंड है सन अकाउंट. Assuming that the accountings are closed on 31st March every year, depreciation at the rate of 10% per annum is charged on the original cost. और depreciation 10% हम लोगों ने बोला. original cost मतलब straight line method पे. अब 2 accounts you have to prepare. One is machinery, second is Sun limited account. But उससे पहले we'll have to do something called as calculation of interest. तो सबसे पहले calculation of interest का format, particulars, down payment, 3 years, 31st March 21, 31st March 22 and 31st March 23. Opening cash price, down payment और installment, interest at the rate of question में दिया गया है at the rate of 15%. तो हम writing here 15%. Cash price paid and closing cash price. Okay, this is the format of calculation of interest. सबसे पहले ये working करना पड़ेगा. Based on this then we can prepare the accounts. Okay, 3 years का account that we need to prepare. तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमें वील हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर इंटरेस्ट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस. क्वेश्चन में दिया गया है कि मशीनरी इज कॉस्टिंग 9 lakhs. ओके, 9 lakhs वाज दैट ओपनिंग कैश. उसमें से डाउन पेमेंट है इंस्टॉलमेंट. ना जब हम लोगों ने खरीदे प्रोडक्ट, वेन एवर वी बॉट द मशीनरी 9 लाख का था. ऑन द स्पॉट हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था ₹3 lakhs का. ओके, द डे वी बॉट, जिस दिन हम लोगों ने मशीनरी खरीदे उस दिन पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है. इट इज आफ्टर 1 year. ओके, सो कैश प्राइस पेड, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैश प्राइस पेड मतलब हम लोगों ने टोटल कैश प्राइस इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट प्लस द इंटरेस्ट. ओके, तो 3 lakh प्लस नथिंग इज 3 lakhs. So closing cash will be opening minus cash price paid. Okay, so 9 lakh minus 3 lakh, 6 lakh. Okay, so ये हो गया हमारा फर्स्ट डाउन पेमेंट का वर्किंग, द डे ऑफ डाउन पेमेंट. Now closing cash price of the down payment become the opening cash price on 31st March 2021. तो 6 लाख से हमारा चालू होता है. ओके, इंस्टॉलमेंट, हम इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे ना. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट विल बी, इंस्टॉलमेंट इज बेसिकली योर कैश प्राइस पेड प्लस द इंटरेस्ट टुगेदर. अब इंटरेस्ट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम लोग को करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट. ओके, सो बैलेंस वैल्यू दैट वाज 6 lakhs. अभी 6 lakhs का लोन पड़ा है हमारे पास. ऑन 6 lakhs वी विल चार्ज 15% इंटरेस्ट विच कम्स टू 90,000. 90,000 नोट करेंगे हम यहाँ पर. कैश प्राइस पेड, नाउ याद रखो 9 लाख का मशीनरी था. फ्रॉम दैट वी पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 lakhs, 6 lakhs बचा.
फ्रॉम 6 lakhs यू हैव टू पे दैट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो डिवाइड बाई 3, हर साल 2-2 लाख रुपया हमें पे करना है, तो हम राइटिंग 2 lakhs। तो टोटल कितना हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, 2 लाख प्लस 90,000, 2,90,000 का इंस्टॉलमेंट है। ओके, नाउ 6 lakhs माइनस 2 lakhs इज 4 lakhs, अगेन 4 lakhs ऊपर आ जाएगा। On 4 lakhs we will find 15%, sorry, on 4 lakhs we will find 15%, it comes to 60,000, so interest 60,000 है। 2 lakh का installment value है, so we are paying 2,60,000 as total installment। 4 minus 2 is 2 lakhs, so that's 2 lakh। Okay, so from Calci पे 2 lakhs into 15%, that's 30,000। We are going to pay 2 lakh, so 2 plus 30 is 2,30,000 is the total installment paid। Answer में final value will come 2 lakh minus 2 lakh is nil। Okay, so this is the very first working that you require, that is working note on calculation of interest। So with this detail now we can prepare the accounts। Okay, so very first account that you have to prepare is machinery account। अब मशीनरी अकाउंट के लिए रिमेंबर, फर्स्ट वी आर परचेसिंग अ मशीनरी, then every year there's going to be something called as depreciation that you need to charge on the original method पे or original value पे। Okay, now they have given us in the question, okay, वहां पर क्वेश्चन में दिया गया है depreciation to be charged at 10% per annum on original cost method। ठीक है, तो चलो let us start how to pass the entries in machinery account on date wise। 1st April 2020 को we purchased a machinery। okay, we purchased a machinery from Sun Limited, तो वहां पर हम लिखेंगे to Sun Limited। हम लोगों ने मशीनरी खरीदे for 9 lakhs। पूरे साल और कुछ किए नहीं है, तो वी कम टू द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द ईयर ऑन 31st March 2021 बाय depreciation, or they said depreciation to be charged on original cost method 9 lakh 10%, so 9 lakh का 10% is 90,000। so on 31st March 21 by balance carried down we tally this part, 9 lakh, तो 9 lakh minus 90,000 is 8 lakh 10,000। ये हमारा था फर्स्ट ईयर। सो नाउ वी जंप टू द नेक्स्ट ईयर 31st March, so next will be 1st April 2021 to balance brought down 8 lakh 10,000। पूरे साल कुछ किए नहीं हम लोग ने, तो 31st March 2022 बाय डेप्रीसिएशन, अगेन इट्स ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फुल ईयर वी हैव यूज्ड इट। ओके, सी लास्ट लाइन क्वेश्चन में दिया गया है कि डेप्रीसिएशन एट 10% चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फुल ईयर अगर यूज किया है तो 9 लाख का 10% इज 90,000, तो 90,000 कम हो जाएगा। 31st March 2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अगेन वी विल टैली 8 lakh 10,000, 8 lakh 10,000। now Calci पे 8 lakh 10,000 minus 90,000, so it comes to 7 lakh 20,000। it comes down again on 1st April 2023, last year है ये, to balance brought down 7 lakh 20,000। on 31st March 2023 अगेन बाय डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट 9 लाख फुल 10%, क्योंकि हम लोग ने बेचे कुछ है ही नहीं इसे, तो 90,000। ऑन 31st March 2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो अगेन वी टैलिएट 7 lakh 20,000 ऑन बोथ द साइड्स माइनस 90,000 कैल्सी पे, सो वी गेट 6 lakh 30,000। ओके, एंड खाली लास्ट दिखाने के लिए, ओके दिस इज 1st April 23, दिस इज 24। ओके,
20, 21, 21, 22. Oh, this is 22. Sorry, this was 23 itself. ये 23 है, okay? So to balance brought down 6,30,000. Like I'll just cancel this thing. It's 23 itself. Okay. So this is how you all had to prepare machinery account. Okay, बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लोगों ने मशीन खरीदे, डेप बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन. सिर्फ 3 साल का अकाउंट्स क्रिएट करना था फॉर मशीनरी अकाउंट. अगेन 9 लाख से हम लोगों ने खरीदे थे. इसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे ना डिप्रीसिएशन है, हमारे इंटरेस्ट आएगा अभी नेक्स्ट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे सन लिमिटेड में. अंडर दैट इट विल बी यूजफुल. ओके, चलो ऑल के नोट डाउन अप टू ईयर. पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम मशीनरी अकाउंट चालू करते हैं. आई मीन सॉरी, द नेक्स्ट अकाउंट सन लिमिटेड अकाउंट चालू करते हैं. ओके, चलो एक और शीट ऐड कर देता है यहाँ पर. दैट इज आवर सेकेंड अकाउंट, सन लिमिटेड अकाउंट. वर्किंग यहीं पर रखा हूँ तो इट बिकम इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना, इन मशीनरी अकाउंट इट वॉज ऑन 1 अप्रैल 2020 टू सन लिमिटेड. और सन लिमिटेड में हो जाएगा उसका रिवर्स एंट्री बाय मशीनरी अकाउंट. ओके, तो वहां से हमारा सम चालू होता है. सन इज द सप्लायर, तो वहां से हम चालू करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2020 बाय मशीनरी अकाउंट. हम लोगों ने 9 लाख रुपीज का मशीनरी खरीदे थे. The very first thing, we had purchased 9 lakh rupees ka machinery. On the same day, we did something. On the same day, we made a down payment of 3 lakhs rupees. So on 1st April 2020, to bank account, we are making a down payment of 3 lakhs. सबसे पहले, so yeah, remember in suppliers account 3 चीजें आती है बेसिकली. एक तो बैलेंस रहेगा या मशीनरी का वैल्यू रहेगा. सेकेंडली डाउन पेमेंट. इन द फर्स्ट ईयर इट विल बी डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज सिर्फ इंस्टॉलमेंट आएगा एंड इंटरेस्ट आएगा. ओके, बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, खाली ये 3 चीजें आती है. ओनली इन द फर्स्ट ईयर यू हैव द डाउन पेमेंट, अदरवाइज इट्स ओनली इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट. ओके, चलो ये नोट करने के बाद, ओके, आफ्टर नोटिंग आउट द 2 थिंग्स, नाउ जो वी कम टू द 31st मार्च ईयर एंडिंग. ओके, ईयर एंड में हम लोगों ने क्या क्या पे किया है. तो व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट वैल्यू दैट वी हैव मेड. वी हैड पेड 2,90,000. सो ऑन 31st मार्च 2021 टू बैंक वी आर मेकिंग एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,90,000. Okay, and exactly on the buy side, 31st March 2021, we'll write here buy interest. First year का interest was 90,000. Okay, so that's it. We tally it. 9,90,000 on both the side. तो यहाँ पे we'll get the balance. So 31st March 2021 to balance carried down. So from on the calci 9,90,000 minus 3 lakh minus 2,90,000, तो we get 4 lakhs rupees as the balance. तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें 4 lakhs का balance है in the first year. तो again very simple, we bring it down on 1st April 2021 by balance brought down 4 lakhs. Very simple. Now on 31st March 2022 we made the second installment. So by bank account, second installment 2,60,000, जिसमें से 60,000 इंटरेस्ट था. तो 31st March 2022 by interest 60,000. ठीक है, हम टैली करेंगे. That's it, nothing else. Okay, installment interest 4,60,000. तो 31st March 2022 to balance brought down. तो 4,60,000 minus 2,60,000 is 2 lakhs, जो यहाँ का बैलेंस दिख रहा है हमें. अगेन वी ब्रिंग दिस डाउन
31st March 2020, I mean 1st April 2022 to 2021, 21, 22, 22, 23. Okay, because 23 is the closing. So we have buy balance brought down 2 lakhs. Again 31st March 2023 to bank account हम installment make कर रहे हैं. We are making an installment of 2,30,000 जिसमें से 31st March 2023 interest was 30,000. Okay, now when you look carefully and you try to tally, both the accounts will tally because there is no balance further. So 2,30,000 on both the side, and with that account get tallied. This is how you all had to prepare Sun Limited. Okay, तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वर्किंग किए थे. ओके, देन वी प्रिपेयर्ड मशीनरी अकाउंट एंड दिस इज सन अकाउंट. ठीक है, आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड. यू कैन नोट डाउन दिस, पहले एक बार नोट कर दो, देन वी कैन एंड दिस वीडियो हियर. Okay, chalo, I hope everyone have understood this. This was the practical problem sum that had appeared in the paper. Chalo, with that we will be ending this video here. Thank you.